So today we will begin with the question number C part of question number 6, where we need to find the internal angle. Over here it is also x. Alright. So into the question number A and B, we have seen that those polygons were the quadrilateral, है ना, quadrilateral थे, तो easily हम find out कर सकते थे. What about this? अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, how many sides are there? 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 sides. That means it's a pentagon. And we need to find the value of x over here. As it is the pentagon, we have the formula to derive the internal sum of internal angle of the any polygon. That is n minus 2 into the bracket multiplied by 180. है ना, जितने नंबर ऑफ साइड्स होंगी उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज व्हाट वी गोना हैव एज द टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल. राइट. अब दिक्कत ये है कि ये तो एंगल है हमारे पास में, ये दोनों एंगल है. व्हाट अबाउट दिस? हमारे पास में ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू नहीं है ना. वी डोंट हैव द वैल्यू फॉर दिस. नाउ हाउ वी कैन गेट? इफ यू सी इट केयरफुली, हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल 70 और ये वाला जो एंगल है, इसे हम एंगल 1 कंसिडर कर लेते हैं. ठीक है. एंगल 70 और एंगल 1 जो है वो एक ही लाइन पे बन रहा है. इट्स अ लीनियर पेयर, है ना. ठीक उसी तरह से अगर हम इन दो एंगल्स को देखते हैं, दिस वन, तो 60 और इसे हम एंगल 2 ले लेते हैं. 60 और एंगल 2 आर ऑल्सो लीनियर पेयर. राइट. तो हमें लीनियर पेयर को यूज करते हुए वी कैन गेट द वैल्यू फॉर द एंगल 1 एंड एंगल 2. राइट. And using these two values, we will find out the value for the x as using the internal sum of internal angle of a polygon. Okay. So first of all, what we're gonna do is, since angle 1 plus 70 is equals to 180. Why so? We'll write the reason as they are linear pair. Okay. Therefore, angle 1 will be equals to, this 70 is gonna come over here, so 180 minus 70, and the angle 1 is equals to 110 degree. Right. Now similarly, angle 2 plus 60 degree is equals to 180. Why so? We'll write the reason as it is a linear pair. Okay. Therefore, angle 2 is equals to, take the 60 over the RHS of equal sides, so it will become minus 60. Therefore, angle 2 we have as 120 degree. Right. ये हमारा सब क्या बन गया? अब आपका एंगल 1 भी मिल गया, एंगल 2 भी मिल गया. Now we're going to use the formula for sum of, since the polygon has 5 sides, therefore n is equals to 5. n की वैल्यू कितनी आ गई है? 5. Now we use the formula, sum of interior angle of polygon is equals to n minus 2 into 180. This is a formula, right? अब देखो यहाँ हम कह रहे हैं sum of interior angle. We have the interior angle as 30. We have the interior angle as x, then angle 1, and then angle 2. We need to take out the sum. Therefore, what we can do is sum starting from 30 plus x plus angle 1 plus angle 2 again plus x is equals to, what is the value of n? We have just taken out, that is 5 minus 2 into 180. Now, therefore, this 30, just keep it like that. X plus x, it will become 2x. Angle 1 we have just taken out as 110. Angle 2, that is 120, is equals to 5 minus 2, it is 3 into 180. Then after that, therefore, now 130 plus
sorry, 110 plus 30, 140, 140 plus 120, it will become 260. See, 0 0 0, it will become 0. 2 plus 1 3, 3 plus 3, it will become 6. 1 plus 1, it will become 2. So 260 is equals to, multiply by this, 3 zeros are 0, 3 eights are 24, 3 ones are 3, and it is 550. Therefore 2x is equals to 540 minus 260. Now I think from here you can take out the value for the x. सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवीजन के लिए लेकर आएंगे, एंड देन यू विल find out the value for the x. Okay, so this is how the question will be done.